welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is a lecture of FM03, that is Financial Market and Services. So today we will discuss a topic regarding implementation and monitoring credit delivery methodology. So what is the main role of a monitoring system? We are discussing this today regarding credit methodology. So let's start with our topic. So why there is a need for monitoring in an accounts, in a finance? Always there is a need of monitoring. So need for monitoring. Monitoring of the credit portfolio and individual accounts is essential in order to maintain the quality of the credit portfolio of the bank in a sound condition. तो monitoring तो किसी भी चीज की करना बहुत जरूरी है, चाहे वो एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस की हो, चाहे क्रेडिट मॉनिटरिंग हो. तो ये क्या हमारे लिए इजीली वर्क फ्लुएंसी में रहता है. कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं. क्वालिटी ऑफ वर्क बना रहता है. तो मॉनिटरिंग इज देयर विच इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. So in line with the international practices, it is imperative for the banks to implement prudential norms of income recognition and asset classification of individual borrowing accounts in credit portfolio. So किसी के लिए भी चाहे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हो चाहे इंडियन बैंक्स हो, सभी के लिए बहुत जरूरी है क्रेडिट का एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया हुआ हो. सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन शुड बी देयर, क्योंकि जब किसी के भी रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना है तो इट इज वेरी मच इजी टू टेक दैट. Then on the basis of the record of recovery of interest and other payables in the borrower account, the banks classify the accounts as standard, substandard, doubtful and losses. और जब भी क्रेडिट की रिकवरी करनी होती है तो उस टाइम पे या इंटरेस्ट देखना होता है प्रॉपर्ली पे किया जा रहा है नहीं बोरोवर अकाउंट में, तो हम बैंक से करते हैं उन अकाउंट्स को स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड या डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स में डिफाइन करते हैं उन अकाउंट्स को. In the event of the borrower not servicing the interest, installment and other payables for a period of maximum 90 days in a term loan account on an overdraft cash credit and the borrower accounts remaining out of order for a period of more than 90 days, the account is classified as substandard. अगर किसी borrower ने 90 days के time period तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया तो उस तरीके के borrower account को substandard account डिफाइन किया जाता है. Thereafter, depending on the period of default by the borrower and availability of realizable security, the relative account is downgraded to doubtful or loss assets. The borrower account in this situation is termed as non-performing assets. NPA borrower account NPA कब होता है? जब वो किसी भी कंडीशन में बहुत टाइम से कुछ पे ही नहीं कर रहा, इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, बैंक मनी लौटा रहा, तो इस केस में उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा NPA, that is non-performing assets. Thus, it is the challenging task for bank to keep the borrower account in standard category, and for this purpose, continuous monitoring of account is called for. तो अगर किसी borrower का अकाउंट NPA हो गया है तो या सब स्टैंडर्ड हो गया तो बैंक के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि उसका अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखा जा सके, और वो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स के अकाउंट्स की या बोरोवर्स के अकाउंट की रिकवरी के लिए. इन बिगर बैंक्स द फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शनिंग डिपार्टमेंट एंड अदर क्रेडिट मॉनिटरिंग सैंक्शन फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. बिगर बैंक्स में ये क्रेडिट मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट अलग कर दिया जाता है, सबकी अलग अलग वर्क सैंक्शन कर दिया जाता है. So credit monitoring department deals with only standard assets and substandard assets which are not marked for recovery action. Special attention is given to accounts which are standard assets but showing signs of occasional delinquency or aberration from the standard norms. So अब यहाँ पर these accounts are classified as watch list accounts and need constant monitoring by monitoring officer of the bank. तो monitoring तो करनी ही पड़ेगी, और officers जितने भी बैंक के they are doing constantly monitoring of an account of the borrowers for the purpose of receiving of money, or if their accounts are NPA then also they are monitoring the borrower's account. Now what are the main objectives of monitoring? So ensure initial delivery or disbursements of credit after complying with the laid down procedures and conditions with due precautions. So properly हमें initial delivery या disbursement credit को properly ensure करना है कि वो properly laid down procedures के according है या नहीं हो रहा है. Then ensure that credit assets remain in standard credit. तो credit assets को ये ensure किए कि जितने भी लोगों ने क्रेडिट लिया है वो प्रॉपरली टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं, जिससे उनका अकाउंट हमेशा स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहे.
Then upgradation of identified weak accounts, watch list accounts, upgradation करना, identify करना weak accounts को. Then take necessary steps to prevent slippage of accounts to substandards and MBA category. अगर MBA category में accounts चलेंगे तो उसके लिए भी हमें कुछ special steps उठाने पड़ेंगे बैंक को. Then goals of monitoring. What are the main goals of monitoring? These some of the points are mentioned in this, that periodical monitoring of actual performance of business of borrower, projections accepted at the time of appraisal of credit facilities, periodical performance as against the projected level of sales, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स. तो मेन गोल्स क्या है, जो आपने क्रेडिट बोरोवर अकाउंट में क्रेडिट किया है अमाउंट, उसके रिगार्डिंग आपको पीरियोडिकल परफॉर्मेंसेस को चेक करना है, प्रोजेक्टेड द लेवल ऑफ सेल्स चेक करना है, प्रॉफिट्स ऑपरेटिंग को चेक करना है, इन्वेंटरी एंड डेट लेवल्स, कैश फ्लो एक्सेट्रा हैव टू बी ऑब्टेन्ड एंड मॉनिटर. तो ये चेक करना है, मॉनिटर करना है और उनको प्रॉपर्ली फॉलो अप करते रहना है. देन सेकंड इज आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग टेम्पररी और क्रिटिकल एब्रेशंस coming in the way of smooth functioning of the borrowing unit for timely and suitable action. Then interacting regularly with the borrowers through timely inspection. और इसके अलावा borrowers के timely inspection से भी हम properly work देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, timely चेक कर सकते हैं borrower account में inspection करके कि सब चीजें proper हैं या नहीं है. Then इसमें क्या क्या points आ सकते हैं, that is ascertain the level of sincerity and interest of promoters. Then other is ascertain whether the funds invested in the business are adequately protected or whether day-to-day problems facing the business are being addressed in the time. तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है. Then get a feel of financial problems of the borrowing unit without delay and to take remedial action. Financial problems को डिले करे बिना सॉर्ट आउट करना चाहिए, रेगुलर और अडैक बेसिस पे उनको इवैल्यूएट करते रहना चाहिए. Then ascertain whether there are any impediments in timely service of interest and repayment of installment due to बैंक. ये भी प्रॉपर्ली चेक करते रहना है कि टाइमली इंटरेस्ट जो है वो प्रॉपर्ली पे हो रहा है, रीपेमेंट्स हो रही है, इंस्टॉलमेंट्स बैंक को आ रही हैं. तो ये सारी चीजें भी हमें प्रॉपर्ली चेक करते रहना है. Then ensuring the end use of funds and prevention of diversion of funds. So these are some of the goals of monitoring. Then tools of monitoring. What kind of tools are there? These are some of the monitoring tools. That is, number one is certified statement of actual cost of the project, the original envisaged cost of the project. The actual cost of the project क्या है, ये certified करना बहुत जरूरी है. Then stock and book debt statement should be clearly mentioned. Then monthly cash budget or wherever applicable this should be done. So these are some of the tools. Then returns of quarterly information system should be done. Statements of monthly select operational data should be done. Inspection reports should be prepared. Then stock inspection reports of outside agencies should also be prepared. Then concurrent internal or revenue audit report should be there. Then factory visit reports. Then technical officers report. Then audited provisional financial reports. तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मॉनिटरिंग में, क्रेडिट मॉनिटरिंग में यूज किए जा सकते हैं. इसके अलावा है 12th status inquiry from other banks regarding the account promoters or guarantors. Then account operation security. Then statutory audit reports, then internal inspection reports or special audit reports. The organization can use or a bank can use any one of the two from these. Then comments of the regularity authorities, annual review of the account, visits by officials from controlling offices of the branches, then monthly or quarterly monitoring reports, then minutes of consortium meetings. So these are some of the focus points regarding the monitoring tools, and the focus of monitoring process is always to ensure that safety of funds lent and the see that account is conducted as per terms and conditions of the sanction. तो बेसिकली यही मॉनिटरिंग के सारे टूल्स यूज होते हैं और देखा जाता है प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही अकाउंट है या एनपीए है. Then monitoring function is a bank should cover all the 3 stages. मॉनिटरी फंक्शंस जितने भी बैंक के उसके अंदर सारी 3 स्टेजेस इंक्लूड होनी चाहिए. दैट इज प्री डिस्बर्समेंट, दैट इज ड्यूरिंग डिस्बर्समेंट एंड पोस्ट डिस्बर्समेंट फेजेस ऑफ एन एडवांस अकाउंट. प्री डिस्बर्समेंट स्टेज कवर्स obtaining satisfactory credit reports from existing lenders. तो मेंशन है किस स्टेज में क्या क्या चीजें आएंगी. इसके अलावा ड्यूरिंग द डिस्बर्समेंट मॉनिटरिंग वर्क शुड इंश्योर द
the right manner. Then post disbursement monitoring forms a substantial part of monitoring function in the bank. So these are some of the stages. तो इसके बाद है कुछ कैटेगरीज ऐसी है मॉनिटरिंग में जो हमें अलग से भी पता होनी चाहिए और हमें आनी चाहिए. दैट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. व्हाट काइंड ऑफ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स दैट कैन बी नोटिस्ड इन कोर्स ऑफ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ बोरोवर अकाउंट. जब वो बैंक प्रॉपर्ली कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करती है बोरोवर अकाउंट्स की तो कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे. कुछ पॉइंट्स मेंशन है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के. दैट इज नॉट कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री और सिक्योरिटी. कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है. These are the early warning signals. Then unplanned borrowing for margin contribution, delaying payment of interest beyond 30 days, more than one installment overdue and beyond 30 days, then return of checks for financial reasons, then reduction in credit submissions, longer outstanding in the bill purchased account, longer period of credit allowed on sale and frequent returns of goods by buyers. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के. constant utilization of working capital, then unexplained delay or failure of submit periodical statements, frequent request of over limit या additional limit. तो जब हम over limit या loan की additional limit पे borrowers फोकस करते हैं, बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल है. वो प्रॉपर पहले वाले लोन का तो पे कर नहीं रहे, वो लोग आगे से फ्रीक्वेंट डिमांड्स कर रहे हैं. देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन borrowers dealing with the bank, अवॉइडिंग टू मीट बैंक ऑफिशियल्स. वो प्रॉपरली बोरोवर बैंक ऑफिशियल से मीट नहीं करना चाहता, खड़ाते हैं बैंक ऑफिशियल्स तो भी वो झूठ बोल देते हैं, उनके सामने नहीं आना चाहते. तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में आती हैं. देन frequent breakdown of plant and machinery and government renting sales turnover, frequent labor problem and stoppage of work. तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली बैंक से नहीं मिल रहा या बैंक में अपना प्रॉपरली अमाउंट पे नहीं कर रहा. डिले और फेलियर टू पे द स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड डाइवर्जन ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, abnormal increase in debtors and creditors and rapid turnover of key personals. So the above list is illustrative but not exhaustive. Detection of early warning signals and initiating timely action to maintain the good health of an account is primary function of monitoring officer. तो मॉनिटरी ऑफिसर का पहला फंक्शन यही है कि वो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को समझे बोरोवर्स की और उसी के अकॉर्डिंग क्विक एक्शन ले रिगार्डिंग द अकाउंट ऑफ द बोरोवर्स. Many a time the top management of bank calls for a few crucial information of borrower accounts from the credit officer on monthly or quarterly basis. तो इसमें हमने जितना भी कुछ पढ़ा तो क्रेडिट के रिगार्डिंग मॉनिटरी के पढ़ा तो क्रेडिट ऑफिसर या मॉनिटरी ऑफिसर्स को जितने भी मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं उन्हें प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए. अर्ली वार्निंग सिग्नल्स में हमने टोटल 15 to 16 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं. तो दीज आर सम ऑफ द अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. और जब कोई प्रॉपरली पे नहीं कर रहा, बैंक से पैसा तो ले लिया बट दे आर नॉट पेइंग इट प्रॉपरली और दे आर नॉट पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स टू द बैंक प्रॉपरली, तो ये कुछ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हो सकती है. इन्हीं से हम मॉनिटर करके या मॉनिटर ऑफिसर जो भी है वहाँ पे वो ये चेक करके एक क्विक एक्शन ले सकते हैं. क्योंकि अगर बैंक से सारे पैसे लोग लेते रहेंगे और रिटर्न जल्दी नहीं करेंगे या करेंगे नहीं या एनपीए हो जाएंगे सबके अकाउंट, तो बैंक कहाँ से पैसा लाएगा या हमारी इकोनॉमी आगे कैसे ग्रोथ करेगी. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के ध्यान रखने चाहिए. लोग किस तरीके से झूठ बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करते, बैंक ऑफिशियल से आकर बात नहीं करना चाहते या ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो मेंशन है. अपना चेक प्रॉपरली सबमिट नहीं करते, इंस्टॉलमेंट के 30 डेज भी ऊपर होने के बाद भी वो इंस्टॉलमेंट को सबमिट नहीं करते टाइमली. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. एज अ फाइनेंस वी आर स्टडिंग फाइनेंशियल subject as a specialization, so we should keep in mind all these things. तो बोरोवर अकाउंट की मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए बाय द मॉनिटरिंग ऑफिसर और बाय द बैंक. और उसके लिए क्विक एक्शंस जैसे भी गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स रेगुलेशंस है और बाय द आरबीआई उस तरीके से स्टेप्स को उठाना चाहिए और मनी रिकवर करने के जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें पूरा करना चाहिए. तो इसमें हमने ये पढ़ा. और जितने भी हमारे मॉनिटरिंग फंक्शंस होते हैं हमने पढ़ा कि वो 3 टाइप्स की स्टेजेस में डिवाइडेड है. प्री डिस्बर्समेंट स्टेज, देन डिस्बर्समेंट स्टेज एंड पोस्ट डिस्बर्समेंट स्टेज. तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए. इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग मॉनिटरिंग फंक्शंस वर्क करते हैं. उसके अलावा इसमें हमने कुछ मॉनिटरिंग टूल्स पढ़े और ये मॉनिटरिंग टूल्स हमेशा यूज किए जाते हैं व्हाइल मॉनिटरिंग द क्रेडिट ऑफ अ बोरोवर अकाउंट या बोरोवर अकाउंट को जब भी कोई मॉनिटरिंग ऑफिसर मॉनिटर करता है. सो
this is the things which we have studied today, and what are the goals of monitoring and what are the objectives and why the need of monitoring is there while from the point of view of bank or other. So this is all for today. तो आज हमने monitoring complete किया regarding credit or regarding the borrower accounts. So this is all for today and thank you. Have a